So I'm not a mascara person, nor I'm a false lash person as well. And I am not someone who uses a lot of gloss. No, क्या हो? It's good to go. It's good to go. आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्विकली कैसे रेडी होती हूँ. हाउ डू आई डू माई मेकअप एंड गिव अ नो मेकअप लुक काइंड लुक. So yeah, we'll quickly start with it. So firstly I will apply sunscreen and I also mix moisturizer with it. Varka, would you like to say hi? Hi. She's saying no. She won't say hi right now because it's my first video. So she's like, Niyati, you face the camera. Okay, so it's my habit कि मैं थोड़ा अपना स्किन पर मसाज करती हूँ so that circulation हमारी अच्छी हो जाए. Varka, you should also do this with me. Actually, you should also do this if you have time right now, Okay, then we'll start with the concealer. Sorry, I'll just tie my hair. Okay. इसके साथ मैं एक लाइट कंसीलर भी मिक्स कर रही हूँ. वैसे आई एम अ पर्सन जो बहुत ही ऐसे कम फाउंडेशन यूज़ करती है. अभी हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें. मेरे तू जो पास हो. Okay, now I'll just use very little foundation. Also because मेरा ज़्यादा शूट नहीं है, which is why I'm applying very little foundation. एंड व्हाट आई डू इज़ मैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ. I'm just trying to face my mirror over here.
यू नो ब्लेंडिंग इज़ द की. मैंने जितने भी मेकअप दादा और मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है, दे ऑलवेज टेक लाइक गुड टाइम टू ब्लेंड द मेकअप, द फाउंडेशन, कंसीलर एंड एवरीथिंग. Okay, we're pretty much done. Now we'll set our product. आप लूज पाउडर से भी सेट कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन इट, पर मैं आज कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी. Okay. Down. वैसे आप सबको आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेकअप करना आता होगा. आई फील लाइक दैट कि मुझे इतना, आई एम नॉट अ प्रो मेकअप पर्सन. सो आई एम श्योर आपको ये सब तो पता ही होगा, बिकॉज दिस इज सो बेसिक एंड यू विल बी लाइक यार नियति, हाँ मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा मेकअप करना आता है, बट यू नो आपको नियति जैसा मेकअप करना नहीं आता होगा ना, है ना. सो विच इज़ वाई एम शेयरिंग दैट विद यू. अभी हम क्या करेंगे, दिस इज़ द स्टेप विच आई लव, कटिंग. सो हम थोड़ा यू नो जॉ लाइन को शार्प कर देंगे, यू नो चीक बोन को शार्प कर देंगे. तो आई डू दिस. ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, थैंक्स टू द प्रोफेशन आई मीन, कि मुझे ये सब मास्टर्स जो है इंडस्ट्री के मेकअप आर्टिस्ट्स, उनसे सीखने का मौका मिला है. This also I learned ऐसे अभी recently, and it's a good step. अब इसको मैं blend कर दूंगी. La. Okay. Now we will go to our eyeshadow. Okay. Okay, so since my look is very natural, I am not using any bright colors. I'm going with a shade this, and then for the socket I'll use this brown. Okay, and I'll also mix this shade with this shade. Okay. I love the mattes, honestly. I am not someone who
uses a lot of gloss lip or glossy eyeshadows. But हाँ, I like highlighter, so हम highlighter यूज़ करेंगे definitely. मैं जनरली हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ. आई स्किप द हाइलाइटर पार्ट, बट द लुक दैट आई एम डूइंग टुडे उसके लिए आई माइट नीड अ हाइलाइटर. आई मीन दैट विल लुक गुड, सो विच इज़ व्हाई आई विल गो अहेड विथ हाइलाइटर. Okay, so now we'll do the socket, and as I said, I'm using the darker brown shade. This is the trickier part also, I feel, क्योंकि कई बार लाइक मुझसे ये ब्लेंड नहीं होता अच्छे से, तो मुझे काफ़ी ब्लेंडिंग करनी पड़ती है इससे. बट काम चल जाएगा आज का. I think it's okay. जब मैं छोटी थी तब मुझे मेकअप का वैसे बहुत शौक था. हम आई यूज़ टू अप्लाई ऑल माई मम्स लिपस्टिक्स एंड द ब्लश ऑन्स, और मैं कई बार ख़राब भी कर देती थी, बट मम यूज्ड टू लेट मी डू इट. एंड देन व्हेन आई ग्रू, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कम हो गया मेकअप में. And then here I am. Okay, I think it's looking really good. Yeah, it is. Great. So now, I'm not going to do a typical liner. So what I'll do is I'll take this black and brown and I'll apply it ऐसे. And this brown I'll apply on the waterline as well. Awesome. Similarly, I'll repeat this on my left. One side is always so tricky, na? I think for me it's left. Ugh. As I said, I'm not a pro. Okay, and the brown नीचे. Okay. Now, I'll take a black kajal and I'll just apply it ऊपर.
you know, like not like very dark and precise, but I'll just, you know, darken what I've applied with the eyeshadow, little make it defined with the kajal. So I'm gonna take the pencil. And I'll also not start from like the beginning. I'll just start beach में से. Yeah. No, I'm doing little bit in the beginning because I think that's looking really incomplete. Yeah. Done. It's looking nice. See, honestly, I didn't know that, you know, no makeup look is also a look. But then I figured and I learned. Okay, now it's the blush on time. So we'll take this and we'll put two dabs. Okay, little on my nose as well. And ऊपर. Smile, smile. Yeah, it's looking nice. It's actually looking like, you know, very subtle and like, you know, like very natural. Yeah. Shonu. वहाँ जाना है. She wants to go. जाने दे. Okay. What is remaining? Yes. My eyebrows. I want to brush my eyebrows. But उससे पहले I'll just do little bit filling. You know, जहाँ पे भी मुझे लग रहा है empty space है तो हम उसको थोड़ा define कर देंगे. And I'll brush it. मैं सेम आई अपने ये आई शेडो से ही अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ. I'll take black and brown and little, you know, I'll just fill.
आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र उठला गई आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र उठला गई Okay, good. It's good to go. It's good to go. Now, थोड़ा ब्रश कर लेंगे. हम so I'm not a mascara person, not at all. So I'll just brush my lashes. Nor I'm a false lash person as well, unless I like really have a traditional look, a typical Indian look, उसमें I might wear lashes. And fortunately in all my looks also अब तक जो मैंने shows किए हैं उसमें भी I haven't had to wear lashes except for Nazar. In Nazar I used to wear lashes every day because ना how that look was, Sarpika and everything. तो उसमें मैं lashes पहनती थी, but otherwise मैंने इतने lashes कभी पहनी नहीं है. And then you go there. Just brush. Okay. We are there. We're good to go. Now, my highlighter part. I have this Macca highlighter which is 3 shades and these are so pretty. And as I said, I'm not a very glossy look kind of person, तो मैं इतना यूज करती नहीं हूँ, बट आज मैं कर लूँगी. सो मैं सारे शेड मिक्स करके लगा रही हूँ. ये कुछ टेक्निक्स ना मैंने अपने नज़र के सेट से सीखी है, क्योंकि उसमें मुझे सर्पिका देन अ लॉट ऑफ अदर लुक्स दैट आई प्लेड, उसके लिए आई हैड टू do different looks most of the days. Yeah. Now we will go with the lip shade. I'm thinking what lip shade I should go with. I have loads of lipsticks. So the look that I am doing right now is a very natural look actually. So I'll go with a brown lipstick, nude brown. I also have same in liquid, so I think I'll go with liquid. Yeah, I think I'll go with the liquid. This is so natural.
Wow. क्या हुआ? नहीं अच्छा लग रहा है? My sister is looking at me just nodding no. क्या हुआ? This is not looking natural. This is not looking natural? No. It looks like you've applied a lipstick. हाँ, okay. It does look like, no, yeah. I mean, it's not a. It's of course not a without lipstick look. It is a lipstick look. तो वैसे तो ये भी नो मेकअप लुक है. ये भी like it certainly looks like I have put on Then why is makeup. it called a no makeup look? We call it Because- a basic makeup look. Okay, so finally Barkha has spoken. Barkha ने हमें ज्ञानवाणी दी है. डुडुम. So I will call this a basic makeup look. And this is not a natural lip shade, guys. This does look like a lipstick. I agree. This looks like a lipstick. Chalo yaar. So yeah, guys, I am ready. Okay, my makeup is done, and I am pretty happy with my makeup. And it was pretty quick, right? Now I'll quickly get my hair done. You know, I'll just do some little curls, and then I'll wear my outfit. See you guys. I hope you liked this little bit of makeup session with me, and you can also try because it's really quick. I don't think it does take a lot of time. So yeah, for more such sessions and more such our time, please like this video and share this video and subscribe. Bye guys, have a great day.